Hello students, welcome to the part number 2 of Max chapter number 3. Okay, in part number 1 we had ended at the question number 3 of exercise 3.1. Now we will start our question number 4 of exercise number 3.1. So read the question in your textbook. A cricketer scores the following runs in 8 innings. Okay, cricketer ने 8 इनिंग के अंदर रन स्कोर किए हैं. तो यहाँ पे रन्स लिखे हुए हैं आपके सामने 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. And what you have to do? You have to find the mean. I written the formula here. Mean is equal to sum of observation divided by number of observation. So सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है आपको? इन सब का नंबर, ये सब नंबर दिख रहे हैं आपको. इन सब का क्या करना है? प्लस करना है. सो प्लस द नंबर 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है यहाँ पे? तो काउंट द नंबर जो आपने सम किए यहाँ पे. तो देखा कि 8 नंबर, तो डिवाइड बाई 8 कर दो. नाउ इन सब का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? 400. ओके, एंड डिवाइड बाय 8. सो नाउ वी विल डिवाइड दिस. डिवाइड आपको अच्छी तरीके से आता है, यू आर इन द 7th स्टैंडर्ड. सो व्हाट यू विल डू? यू विल डिवाइड दिस नंबर. तो 8 5 40. ओके, 8 5 40 and his 0 come upside, so it become 50. So mean क्या मिलता है हमें? 50. मीन हमें क्या मिलता है? 15. 50. Do it this sum in your book. Now moving on, question number 5. Okay, write this. Okay student, now moving on question number 5. See your book. I am reading the question. Okay. So question number 5 is following table shows the points of each player score in 4 game. So table मैंने यहाँ पे बना दिया है. I wrote the table and I had also mentioned that player A scored the 14 marks, okay, or 14 score in first game, 16 score in second game, 10 score in third game and 10 score in fourth game. Similarly for B and for C. Okay, that much they said this. कि एक प्लेयर है, उसने हर एक गेम में कितने मार्क्स और कैसे स्कोर मिले हैं उसको. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट एंड स्कोर पर गेम. सो हमें क्या करना है? पहले मीन फाइंड करना है. किसका मीन फाइंड करना है? फर्स्ट प्लेयर. प्लेयर फर्स्ट इज ए. सो वी हैव टू फाइंड द प्लेयर ए mean value. Okay, so what is the mean formula? Mean formula is sum of all observation. तो A कौन कौन सी गेम खेला था? ये चारों के चारों गेम खेला था. तो A का स्कोर यहाँ पे लिखा है. ये रो है ना, वो पूरी A का स्कोर है. ठीक है, तो मीन ऐसा लिख दो, मीन फॉर और कैन से ऑफ A's. ओके, इट गिव अस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 plus 10 plus 10. Okay, that means 1 2 3 4 divided by 4. Now we have to add the upper number. We have to add. So 14 plus 10, it means 24. Okay, 24 plus 16, it means 2 3 4 40. 40 plus 10, that means 50. So we get 50 divided by 4. Okay students, now we get 50 divided by 4. So what is the answer for 50 divided by 4 is? यहाँ पे डिवाइड कर लेना है हमें. ठीक है, ये देखिए 4 नीचे है, उसको बाहर रखना है. 50 ऊपर है, उसे अंदर रखना है. Now 4 1 जा 4. 5 minus 4 means 1. 0 come down. 4 2 जा 8. ओके, 10 minus 8 means 2. ओके, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम 0 रखेंगे. यहाँ पे पॉइंट रखेंगे पहले, और यहाँ पे क्या करेंगे? 0 means 4 5 जा 20. ओके, 20 minus 20 means 0. So we get 12.5. So mean for A's player, we get
12.5. Write in your book. Now moving on, question 2 of question number 5. Okay, write this. Now question number 5 का second question. See in your book, to find the mean number of points per game for C. So we have to find the mean for C player. Okay. Then would you divide the total point by 3 or 4 and why? So they ask the question that is it divided by 3 or 4 for the C player, and if it is dividing then why? Okay, we have to give the answer. The 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका हमें आंसर देना है. किसके लिए? प्लेयर सी के लिए. अब यहाँ पे प्लेयर सी को कितनी गेम खेला है, तो यहाँ पे देखो गेम 1 खेला है, उसमें 8 मार्क्स है, 8 पॉइंट्स है. गेम 2 इट गेट 11 पॉइंट्स, एंड गेम 3 ही डिडंट प्ले, सो डिड नॉट प्ले, एंड गेम 4 ही प्लेड एंड गेट द 13 marks. So if he played and doesn't get any points, so it means 0, but he didn't play, so that means we will write did not play. Here the C point B means player B had played the first game and didn't get any points, so it means 0. Okay, अगर वो खेला है उसे पॉइंट नहीं मिले, हार गए, तो हमें 0 करना है. ठीक है. अब यहाँ पे जो C प्लेयर है उससे थर्ड गेम खेली है, पर वो थर्ड गेम नहीं खेली, उसने फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ खेली है, थर्ड गेम नहीं खेली, इसलिए क्या किया, डिड नॉट प्ले. सो वो वी विल गिव द आंसर दैट ये सी का जब हम मीन निकालेंगे, व्हेन वी कैलकुलेट द मीन फॉर सी वी विल डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज वी ऑब्जर्विंग ओनली 3 नंबर 1 2 3. ओके, सो वी विल राइट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स. ओके, सो टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सी पर गेम we should divide the total point by 3. That's all. Okay, हम 3 से डिवाइड करेंगे. उसका रीजन क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि वो 3 गेम ही खेला है, उसमें 3 में ही उसे पॉइंट मिले हैं. Now moving forward for third one. Now coming forward to the question number 5, point number 3, that see in your book, B played in all the 4 games. Okay, B played all the 4 games. First game he get the 0 points, second game he get the 8 points, third he get 6, and fourth he get 4 points. So what we have to find? How would you find the mean? So how we will find the mean? I had written the formula of mean here. Okay, sum of all observation divided by number of observation. Okay student, now calculate means sum of all the observation. The 0 for player B. Okay, 0 plus 8 plus 6 plus 4 divided by 1 2 3 4. How many number we have? 4 number. So divide by 4. So how many number we get? 6 plus 4 10. 10 plus 8 means 18. So 18 divide by 4. Okay, now we will divide 18 divided by 4. So we will divide here. Okay, 18 divided by 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3 are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, means 4 4s are 16, 2 0. Okay, now we will make here point and यहाँ पे 0 देंगे. Okay, 20 आ गया, 4 5s are 20, 20 minus 20 means 0 0. तो हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद? 18 डिवाइड बाय 4 means 4.5. Okay, now moving on second question, that is last question of this question number 5. Write this. Now moving on number 4. Okay, question number 5, number 4. What they ask? Who is the best performer in this 3 player A, B, C? Who is the best performer? So we will see by comparing the average mean of the 3 players. Okay, so we have the value of A, that is 10.67. Yes or no? A is equal to 10.67. B is equal to 4.5. But we didn't calculate this value of C. So how we'll calculate? Now here we will calculate the value of C.
So C is equal to mean of C. We will find mean of C. Mean of C. So we get here 8 plus 11 plus 13. 8 plus 11 plus 13. How many number we had? Seeing 1, 2 and 3. So divide by 3. Add this number. Okay. 8 plus 11 plus 13. So 8, 9, 10, 11, 12. 2, 1. 1, 2, 3 means 32. We get 32 divided by 3. Now we will divide 32 divided by 3. Okay. 32 को 3 से डिवाइड करेंगे. ये 32 लिख दो यहाँ पे 3. 3 1 जा 3. 0. 2 कम डाउन 2. ओके. यहाँ पे पॉइंट कर देना है. यहाँ पे 0 कर दूंगा क्योंकि 2 है वो डिवाइड नहीं होगा 3 से. के 2 नंबर छोटा है 3 से तो पॉइंट करके 0 लगाएंगे. बाद में 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. 3 5 जा 15. 3 6 जा 18. So 3 6 जा 18. तो यहाँ पे क्या हो गया 10 और ये हो गया 1 0 और ये हो गया 2 फिर से. So we can write here 1.6. Okay. 1.6. Wait. I am writing. There is some mistake. Okay, wait. 32 divided by 3. Okay. So 3 1 जा 3. 0. Okay. I am making here 2. तो अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. ठीक है. यहाँ पे 0 रख दो पॉइंट करके और 3 यहाँ पे 0 रख दो. उसके बाद 3 6 जा 18 हो गया ये. सो हमें क्या मिल गया ये 10 और ये 1 0 और ये 2. सो वी कैन राइट 10.6. ओके. So this value of C is 10.6. Now we will compare the value of A, B and C. Who is the best performer? Okay. So A has 12.5 value, B has 4.5, C has 10.6. So from this calculation and from this observation we can say that A is the best performer. So player A is the best performer. Okay, so write this in your book so we can move further. I think the further part that is part number 3. In that we will move further for question number 6. So kindly tune with me. Thank you very much.